अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ ईयर 2015. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज़ हु इज़ नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट। यूटिलिटेरियनिज़म के फाउंडिंग फादर जो हैं वो जेरेमी बेंथम है, और जो बुक है जिसका टाइटल यूटिलिटेरियनिज़म है वो J.S. मिल ने लिखी है। Ihya Ulum is the work of Ghazali. The Bolshevik movement in Russia was led by Lenin. Which one is the supreme law of the land in United States of America? That is constitutional law. The system of basic democracies in Pakistan was introduced by Ayub Khan. An essay concerning the human understanding is written by John Locke. The father had planned a legal for his son, but the son had no inclination towards that. Who was the son? This was Thomas Hobbes. According to Aristotle, which is the bad government of rich? It is oligarchy. Aristotle ने 6 types of government जो है वो दिए हैं, जिसमें monarchy, tyranny, oligarchy, aristocracy, polity और democracy है, जिसमें से 3 जो हैं ये गुड फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है और 3 जो हैं वो परवर्टेड फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बैड गवर्नमेंट ऑफ द रिच है दैट इज़ ओलिगार्की, और जो गुड फॉर्म ऑफ द जो कि गुड गवर्नमेंट ऑफ द रिच है दैट इज़ एरिस्टोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल classified as rigid and flexible in a book titled Studies in History and Jurisprudence was written by लॉर्ड प्राइस एंड जेम्स प्राइस इन 1901. ठीक है। कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना वॉज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ ज़ेडंग. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्ल मार्क्स. निज़ामुल मुल्क तूसी सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिल्जूक एम्पायर. Introduction to the Principles of Morals and Legislation 1789 was written by Jeremy Bentham. Siyasatnama was written by Nizamul Mulk. Discourse on the Origin of Inequality and Social Contract was presented by Rousseau. अब इसमें आप देखें इस पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बुक्स के नेम से रेलिवेंट हैं। बुक्स के नेम्स मैंने आपको बताया था कि ये आपने ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में इंशाल्लाह 4 से 5 मार्क्स जो है वो ज़रूर दे देगा कंफर्म। तो हर एक राइटर की 5 से 7 किताबों के नाम याद कर लें। बड़ी याद है, मेरे ख्याल में 40 राइटर्स होंगे या 30 फ़िलासफ़र्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इनकी आप 5-5 किताबें याद कर लें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह एक ही दिन में ये याद हो सकती हैं। थोड़ा सा बस रट्टा मारना है, याद करना है, इंशाल्लाह ये आपको जो एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स दे जाएगा। MCQ पेपर के हवाले से भी, और फिर अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं फ़िलासफ़र्स का, तो उसमें भी इनिशियली जब आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे तो इंट्रोडक्शन में आप उसके नेम के साथ कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह की, ये किताब फ़िलासफ़र ने जो है वो लिखी है, तो इसका एक इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है पढ़ने वाले पर कि बच्चों को किताबें भी याद हैं। According to the Allama Iqbal, in which form of the government heads are counted, that is democracy. An essay concerning the human understanding was published in 1690, the most important work of John Locke. Karl Marx had everlasting friendship with a son of a prominent textile manufacturer of Berman, who brought many changes in Karl Marx's life. His name was Friedrich Engel. इसको हीगल से कंफ्यूज नहीं करना, उसका भी नाम फ्रेडरिक हीगल है। द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लेटो केम व्हेन ही वाज 28 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है ऑफ ईयर 2015। नाउ वी विल डिस्कस पेपर 2 ऑफ 2015. The first question of this paper is Downing Street is known for residence of the Prime Minister of UK. Statue of Liberty was given to United States of America by France. Kemal Ataturk was the president of Turkey. Democratic constituencies for election of the members of the Congress is known as gerrymandering. Okay, this is demarcating constituencies for the election of the members of the Congress is known as gerrymandering.
Who was the president of the United States of America during 1991 इराक कुवैत कॉन्फ्लिक्ट? तो उस टाइम पर जॉर्ज H.W. बुश जो हैं ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ USA. Who was the Prime Minister of India during 1971 crisis? इंदिरा गांधी जो हैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी. What was the year in which the Shah of Iran was overthrown? It was 1979. Who wrote the book Last Days of the British Raj in India? It was written by Mosley Leonard. Who wrote the book Muslim Separatism in India? Abdul Hamid. Write down the title of the Constitution of Pakistan. It is the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. How many are the articles in the unamended Constitution of 1973? तो 280 articles है. Who was the author of Pirpur Report? Raja Sayyid Muhammad Mehdi. Who suggested the title of Qaid-e-Azam? Maulana Mazharuddin Shaheed in 1938 at Patna suggested the title of Qaid-e-Azam. Who wrote the book Bush at War? It was written by Bob Woodward. The Senate in Pakistan is partially re-elected after every 3 years. B option is the right one. Who wrote the book The End of India? It was written by Kushwant Singh. The dissolution of the Khilafat and the establishment of Grand National Assembly in Turkey was highly appreciated by Allama Iqbal. The concept of the separation of powers in US Constitution was taken from Montesquieu. ये Montesquieu का सारा concept है separation of powers का. नेक्स्ट है जी, इस्लाम वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इन 1891? तो ये जस्टिस अमीर अली की किताब है. तो ये थे जी आज के हमारे MCQs. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.